Welcome back to Supergrad Scat. In this video, I'm going to take you through the entire process of filling the XAT application form one step at a time. Why do you need to fill the XAT application form? Because you want to give yourself an opportunity to get into the prestigious XLRI and the other 160 plus top tier B schools that can be applied through the XAT score. And why at all we require this particular video? We require this video so that you do not end up making silly mistakes that can finally lead to the ending of your candidature for the XAT. Because if you even make a silly mistake of writing down an incorrect spelling of your name, your candidature can be cancelled. So sit through me and understand that what are the essentials that you need to have, that you need to keep in mind while filling the application form. There are 6 steps that are required to fill the application form for XAT. The very first would be to you registering yourself. The second step would be the verification of your email ID. The third step is going to be the filling of the application form. The fourth one is going to be you uploading the required documents, how to fill the application form, and what are the documents that you are required to upload. I'm going to tell you further in this video. The fifth step is to make the payment, how much payment you need to make, what is the fee that is required to be paid. I'll tell you in the due course of time in this particular video. And the last step would be to submit your application form. So we start with the first step is that we log on to the website that is www.xatonline.in. Now, when you enter this website, when you enter this web address, you will come down to this particular screen. On this screen, you will see that there is a login and the register button. Because we are the first time users, we are going to use the register button and click on it. When we click on the register button, this screen is going to appear in front of us. The very first thing that you need to do is to fill this particular form that's there. So you write down your name. Make sure that the name spelling is exactly the same as the one that is written on your mark sheet. So you enter your name correctly. The next row asks you to mention your email ID. Now, again, it is essential to enter the correct email ID because this is going to be your username. This is going to be the ID on which the further communication is going to be done by the institute. So you need to input a valid email address over here. The next is your telephone number. Again, a valid working telephone number or your mobile number is required because again, this is the other medium for the institutes to communicate to you. So you mention your correct spelling of the name, you write down your email address, you write down your correct mobile number, and then you add the other fields, that is your city. You create a password as well. In the password, make sure that it is a combination of uppercase, small case, special characters, and numbers. So you create a password for yourself and do remember, make it as an easy one. Remember the password. And then you enter the state, then you enter your city, and then you do the captcha verification. Once the captcha verification is done, you tick on the small square that's given over there, and then you register, click on register. Now, when you click on register, a verification email is going to come to your email ID that you have entered over here in this particular form. So as I told you before, it is essential for you to keep a valid ID or enter a valid email ID over here. So when you open your mail inbox and you find the verification email over there, you click on the verification link and you will be able to move ahead in the process of filling the XAT application form. So now again, when you come back to xatonline.in, you will again see this particular form. So now here you do not need to enter the entire information again. All you need to do is you just need to click on existing user login. So when you click on the existing user login, we come down to this particular page. On this page, you will be required to enter your email ID, the email ID that you entered, the email ID that you have verified, along with your password. Now, you do have an option to even log in through the mobile, that is through the OTP verification, but it is going to be good if you can remember the email ID and the password, and you can always put it on the auto remember as well. So when you enter this and you click on login, you will come down to this particular screen, that is the dashboard. Now remember, this dashboard is going to be your friend till the end date, till the time that you get into any one of the institutes that takes the XAT score. So remember your email ID or your login credentials, your email ID, your password, because that will be required to reach over here
the dashboard that is going to stay as a friend with you till the time you get into a particular institute. So any kind of admission related query can be raised over here through this particular dashboard. But all that later. Today we are going to talk about the application process. So you will see that it is written over here XAT application form 2024. Now here you can see this orange button. This orange button here now mentions continue. It is because I've already filled this particular form, or you will over here get the orange button which will say that fill up the form. When you click on this orange button, you will come down to the next screen. On this screen, I've just taken a screenshot over here to tell you that which are the steps that are to be followed over here. Again, filling the form involves 6 different steps. So these steps would be there mentioned as the header on the application form. So when you click fill in the application form, you will come to a screen wherein these headers are going to be mentioned along with the application form. So now these headers are your basic details. First, you need to enter your basic details and you enter your academic details. So remember, you have to fill in your academic details. So you keep your mark sheets with you, or if you have memorized, it is good. Otherwise, keep your mark sheets with you. Then your work experience would be the third step. Along with the work experience, you'll also have to click on the courses that you want to apply for at XLRI. Then the other one, the fourth step is going to be uploading your documents. Which all documents? Again, I'm going to tell you in the video further. Then a declaration has to be signed, and finally the payment has to be made, and then you can submit your application form. So let's start with the first step, that is the filling the basic details. Now, filling the basic details, the first one is your personal details. In the personal details, you will find that your email address and your mobile number will be automatically filled because it has been fetched from the form that you had filled earlier, the registration form that you had filled earlier. So you write down the title, Mr. You write down your first name. The middle name is not important to be written because there's no red asterisk mark over there. Remember, all these red asterisks means that you're supposed to fill in these rows, right? The last name is also not essential, though there's a red asterisk sign marked over there. But then if you do not write the last name, all you can do is simply put a dot over there, okay? Or full stop over there. So your name can be Mr. Akash, full stop, if you're not using any surname. Then you move ahead. If you wish, you can give an alternate email ID and alternate phone number. It is good if you can give. If you don't want to give, that is not an issue. Then the date of birth. Now, again, ensure that this date of birth is same or the similar one as of your 10th mark sheet. So you write down your date of birth. Automatically your age will be calculated in years, months, and days. Then you write down your gender, the nationality, your marital status, blood group, and category. And when you scroll down, you will see that there's a question that is asked whether you belong to the PWD category or not. That is person with disability. So you can tick a yes or no. If you tick a yes, if you require a scribe, that information will be asked. You fill in that information. The other two questions are not mandatory at all because it relates to the Kashmiri migrants and non-migrants. If it is applicable to you, select a yes or a no in either of these two questions. Okay. Then when you scroll further, you will get the parents' details. Now, in parent details, you will see that they will give you a drop down. As you can see here on the screen, the drop down gives you 3 options to either write your father and mother's name. You write your single, if you have been brought up by a single parent, you can choose that as well. And then you can choose the guardian's details as well. So here in this form, I have chosen father and mother details. So when I click on or when I select father and mother details, it brings me down to this particular screen. Now on this screen, first you will just find out the title. When you enter the title, then the other columns are going to appear for you. So when you write down the father's title, then you will have to write down the father's name. Again, the spelling should be same as it is mentioned on the mark sheet. So father's name, father's email address, mobile numbers, father occupation, and the same things for your mother's details as well. And ensure that their spellings of their names is similar or they are similar to the names that are mentioned or the spellings that are mentioned on your mark sheets. Okay. So this would be your personal details, then your parents' details, then the communication address. Now, again, it is so very essential for you to write down a correct email address. Here, students have this doubt that I live in a hostel, I live in a PG, I have an accommodation in my college itself, my graduation college itself. What do I do? What address should I give? So it is always beneficial to give your permanent address. But if you want to stay down till July or August in the place where you are staying, so you can give the same address as well. So
I would suggest that you give your permanent email address so that you ensure that all the mailers that they are sent by the authorities, they reach you in time. So you write down your country, your state, your district, your city, the address line 1. The address line 2 is not mandatory. If your address is 54 Gravity Tower, so you can just write down in the address line 1 and move ahead by writing down your PIN code. So this is the first screen that has asked you your basic details. That is the first step. Now we'll move ahead by clicking next. If ever you want to save these details and fill in the form later, you can click on the button save and exit. Okay. Otherwise, we continue filling the form. So the second step is going to be writing down your academic details. So when you have to write down the academic details, as I mentioned earlier, sit down with all your mark sheets so you do not make any goof up over here and you do not enter any incorrect information. So it will start with the 10th class details. In 10th class details, you have to write down the state. Is it Kerala, Madhya Pradesh, or any of the states? Then the city that you will have to enter from where you have completed your 10th examination. I'll give you an example. For example, if you are from Madhya Pradesh and your hometown is Guna, but you did your schooling from Indore, so you'll have to mention Madhya Pradesh Indore rather than writing your home state. Okay, so 10th state, 10th city, and then the academic details will have to be input from your side. So academic details may, what is it to be input? The institute name, that is your school name. So your school name is going to come over here. Your board name is going to come over here. And if ever in the drop down, your school name, you have to type it. So there is no drop down. You'll have to type down your school name. You'll have to select a board over here, the year of passing. Make sure that you do not make any kind of mistake entering the information that is required over here. Now, marking scheme, there's a drop down. You can select from percentage, from CGP out of 10, CGP out of 4, CGP out of 8. So whatever is applicable, majorly in 10th, it is either CGP or percentage. So we click on percentage. If that is applicable, then we'll have to input the maximum marks, minimum marks, and the percentage would be calculated accordingly. And if you select CGPA, then you won't have to enter the maximum marks and the obtained marks. You just have to mention the CGPA that you have obtained. So after filling the 10th form, 10th detail, then you will see that they ask you after 10th qualifications. So after 10th qualification, either you select 12th or a diploma. So when we select 12, because majorly it is 12, so 12th standard may, again, you will have to input whatever we had input for the 10th standard. So 12th standard may be state, city. So again, remember कि city वही होना चाहिए जहाँ आपका school हो. Fine. So you write down the institute name. Again, the institute name is what? Your school name. Your board, your stream, your year of passing. Then the marks obtained. Again, marking scheme may say you can select whether it is percentage or CGP and also CGP out of 10, 8, 5, 4. Whatever it is, you can select over here. Okay, now one important thing to remember over here is many of you have this question that do I write down my marks of 5 subjects if you're in CPSC board, or you write down the marks of 6 subjects that are all mentioned on your mark sheet. Here, please understand this one thing that what all subjects are mentioned over there on your mark sheet, be it any board, be it the Kerala board, be it the Andhra board, MP board, or CPSC, or any other board, ICSC, all the subjects that are mentioned on your mark sheet, the marks have to be entered for all the subjects. ठीक है? Just because कि 5 subjects से मेरी percentage जो है वो ज़्यादा आती है और 6 subjects से वही percentage मेरी कम हो जाती है, it do not give you any authority to do so. Why? Because if you see over here, it says that include all subjects while calculating CGPA percentage for 12th details. So whichever subjects you have studied and are there on your mark sheet, the marks have to be entered over there. Again, if you don't do this, and at the time of verification, this is found out by the authorities, your candidature will get cancelled. Believe me, it has happened to students. Please do not make any kind of mistakes. Fine? So 10th and 12th ke baad, it will ask you other qualification details. So if you have a professional degree of CA or CS, if you have done that, you will have to click a yes or no over here. When you click a yes, if they ask for details, you can fill in the details accordingly. Moving further is going to be your graduation details. Why graduation details? Because graduation is compulsory for writing down that, right? So graduation type would be the first field wherein you will get the drop down. So drop down, there'll be 3 options.
was it a single degree, was it a dual degree, or was it an integrated degree? तो हो सकता है कि आपने IPM कोर्स करा हो from any one of the IIMs or other institutes that apply, so you choose the integrated program. So if there's a dual degree or a single degree, if you have done BE, so it is going to be the single degree. So you select according to your degree, then you select the graduation state the way we have done it for our 10th and 12th. तो स्टेट सेलेक्ट कर लोगे, बोर्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लोगे और ग्रेजुएशन कॉलेज सेलेक्ट कर लोगे. If ever the board is not there in the drop down, the college name is not there in the drop down, you will select other. And if you can see on the screen, other जैसे ही हम select करते हैं, तो there is another box that is given to us, wherein we can type the name of our board and we can type the name of our graduation college. Fine. So we are done with our personal details. We have filled in our 10th academic details, 12th academic details. अगर कोई professional degree है तो वो भी mention कर दिया है, and we have mentioned our graduation details. We move further. Graduation details के अंदर अब हमको अपनी marks जो है वो input करना पड़ेंगे. तो now here graduation university college type में you will get a drop down wherein it will be state university or IITs or NITs or a central university. You will have to click over here. You'll have to select over here, or a deemed university. You will select over here. You'll put up your examination pattern कि वो yearly था या semester wise था. And when you select this, you will have to now enter the aggregate of the marks that are to be that you have scored. तो यहाँ पर आप देखोगे तो डिग्री का नाम लिखना है, आपको स्ट्रीम लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग है, रिजल्ट का स्टेटस. तो इफ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर डिग्री, यू विल राइट दैट इट इज कंप्लीटेड. और अगर रिजल्ट स्टेटस है वहां पे डिक्लेयर्ड आएगा, नॉट कंप्लीटेड. डिक्लेयर्ड वुड बी द, बिकॉज ड्रॉप डाउन में इट इज डिक्लेयर्ड या इट इज पेंडिंग. तो हम रिजल्ट स्टेटस पेंडिंग कर देंगे अगर हम फाइनल ईयर में हैं, ठीक है. और अगर हम फाइनल ईयर में हैं तो मार्क्स कहाँ तक के भरेंगे, तब तक के जो हमको मिले हुए हैं हम उसको भरेंगे, ठीक है. एंड इफ वी हैव कंप्लीटेड इट, वी विल fill the marks that we have scored for our graduation, ठीक है. Many of us might have done a post-graduation as well. So if ever you have done a post-graduation and you're going for your double post-graduation, then you will have to fill in your post-graduation details as well. So post-graduation degree अगर यहाँ देखोगे तो asterisk sign जो है that is not there. So that means it's not a mandatory question. So you can just leave it blank if you're in your final year or if you've just completed your graduation. So अगर post-graduation के अगर आपको details भरना है तो they will be similar to the graduation details that we have entered. Moving ahead. This brings us to the third step. क्योंकि जब आप ये ग्रेजुएशन वाले डिटेल्स डाल दोगे, अगेन वो सेव एंड एग्जिट और नेक्स्ट वाला बटन आएगा. सो वी क्लिक ऑन द नेक्स्ट वाला बटन एंड वी कम डाउन टू दिस पेज wherein you are asked about your work experience. So the freshers, the final year graduates, they won't have to write down a yes to do you have work experience. Again, it's an asterisk sign, तो yes or no तो आंसर करना ही है. Remember that graduation के बाद का full time employment is only considered as your work experience. Any kind of internship, any kind of work that you might have done during your graduation, that is not accounted for. So please don't write it over here, don't mention it over here. Fine. So if you have work experience that is post your graduation full time, if you have been involved in your job, that is going to be counted. So most of you would be writing a no over here and can move ahead. And if you're writing a yes, if you do have a work experience, all you need to do is that you have to enter your work experience till 31st March 2024. 31st March 2024. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे ड्रॉप डाउन्स में आपके पास एक टेबल है और उस टेबल के अंदर आपके पास अभी यहाँ एक रो दिख रही है बट मोर का बटन भी है. So as many as 5 you can fill over here as your employments. So if you have some work experience that you need to fill, you can fill it over here by mentioning the name of your employer, your designation, कब से कब तक आपने काम करा है और duration of the service वो automatically calculate कर लेगा. और end में एक और बटन रहेगा, बॉक्स रहेगा जहाँ पे आपका total जो है वो calculate कर लिया जाएगा of the months in months कि आपके पास कितना work experience है. Okay, and while mentioning the work experience, remember this thing that we go in the reverse chronological order. That is, we mention the latest one and then we go to the first one. ठीक है, ऐसा ना करना कि first वाला पहले दे दिया और उसके बाद हम last वाला दे रहे हैं. तो हम reverse chronology यहाँ पर apply करेंगे and we'll put the current one over here and then we go back till our first job. Fine. So this will be all about the work experience. और work experience के बाद the all important question, do you want to apply for XLRI? अब यार यहाँ पर नो मत लिख देना. नो लिख दिया तो फिर जैट फिल करने का मतलब ही क्या रहा है ना. हम अपने आप को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं टू गेट इनटू XLRI. आई नो देयर आर 160 plus top tier B schools also that can be applied through ZAT, but the all important XLRI has to be taken as a yes. तो आप यहाँ पर yes कर देंगे. जैसे ही अच्छा अगर आपको नहीं जाना है तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे.
Yes करेंगे तो you will get a list of 6 courses that are given by XLRI at its 2 institutes. One is in Jamshedpur and the other one is in Delhi. Right, there are 2 campuses of XLRI. The former one is in Jamshedpur, or the oldest one is in Jamshedpur, and there's a new campus in Delhi as well. So, business management, human resource management, general management, fellow program in management, फिर XLRI का Rutgers double masters program है, और innovation entrepreneurship and venture creation, this is a new program that they have come up with. So you'll have to select these programs, है ना, and each program has a fee attached with it. तो अगर आपको सिर्फ XLRI का BM और HRM प्रोग्राम ही टारगेट करना है तो आप क्लिक करोगे BM एंड HRM. अच्छा, दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? दैट यू नीड टू हैव अ बैचलर्स डिग्री. इवन इफ यू आर इन द फाइनल डिग्री यू कैन अप्लाई फॉर इट. फाइन. सो बीएम और एचआरएम जब आप क्लिक करोगे तो देयर बी अनदर ड्रॉप डाउन दैट इज गोइंग टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड विल आस्क यू प्रेफरेंस बिटवीन एचआरएम एंड बीएम. तो आपको वहां पे प्रेफरेंस देना है, और अगर आपने बीएम एज अ प्रेफरेंस चूज करा है तो वो प्रेफरेंस आपकी दोनों कैंपसेस के लिए अप्लाई करेगा, जमशेदपुर के लिए भी करेगा और दिल्ली के लिए भी करेगा. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा. तो यूल बी एलिजिबल फॉर बोथ द कैंपसेस. तो बीएम आपने और एचआरएम जो है आपने चूज करा तो आपको एक प्रेफरेंस जो है वो भी देना पड़ेगा यहाँ पर. फिर उसके बाद अगर हम जनरल मैनेजमेंट चूज करना चाहते हैं तो जनरल मैनेजमेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अदर देन द एकेडमिक्स इज दैट यू शुड हैव 60 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस. 60 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ? मिनिमम 5 years का आपका वर्क एक्स अगर होगा देन यू आर एलिजिबल टू देन यू आर एलिजिबल फॉर द जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ अस विल नॉट बी एलिजिबल, सो इसको टिक मत करना. ठीक है. अच्छा, अगर टिक कर दोगे तो सिर्फ इतना होगा कि आपको आगे जाके पेमेंट में इसके लिए भी फीस जो है वो भरना पड़ेगी. एज आई टोल्ड यू कि हर कोर्स का एडिशनल फी है जो आपको पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द फी ऑफ द एग्जैट फॉर्म. ठीक है. फिर फेलो प्रोग्राम इज मैनेजमेंट इज इक्विवेलेंट टू पीएचडी. तो आप आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो ये क्लिक हियर लिखा हुआ है वहां पर चेक कर सकते हो. तो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बीई बीटेक है विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस. फिर एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री. तो आप वहां पर अपने हिसाब से देख लेना, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो प्लीज इसको टिक कर दीजिएगा, वरना मत टिक करिएगा. ठीक है. फिर XLRI का रटगर्स डबल मास्टर्स प्रोग्राम. अब इसके अंदर पे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपका मिनिमम 3 years ऑफ बैचलर्स डिग्री जो है वो मांगते हैं, और अगर आप फाइनल एग्जामिनेशन आपका जून 10th 2024 में भी कंप्लीट हो रहा है, मतलब आप फाइनल ईयर में हो, तो भी आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो. बट अगेन अप्लाई करने से पहले सोच लीजिएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करना भी है या नहीं करना है, बिकॉज हर स्कोर का अपना अपना अमाउंट है जो कि एड अप होता रहेगा एट द एंड. देन इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर क्रिएशन, ये भी जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए ओपन है. फाइनल ईयर वाले जो हैं जो कि ऑब्टेन करेंगे अपना सर्टिफिकेट बाय October 31st 2024, वो लोग भी इस चीज के लिए, इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल हैं. बट यहाँ ध्यान रखिएगा, दे हैव मेंशन्ड दैट द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हु हैव वर्कड इन स्टार्टअप, हु हैव रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, who are who actually want to get into entrepreneurship, who wants to be an entrepreneur, उनको ये प्रेफरेंस दिया जाएगा. इस कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा. तो अब आप यहाँ से प्रोग्राम अपने चूज कर लीजिएगा कि 6 के 6 आपको चूज करना है अगर आप एलिजिबल हैं, या इसमें से 2 ही चूज करना है, 1 चूज करना है. अकॉर्डिंग टू योर प्लान यू कैन चूज इट. फाइन. अब ये चूज करने के बाद हमारा फोर्थ स्टेप आ जाता है, और फोर्थ स्टेप क्या है? वी नीड टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स. अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे? आपका फोटोग्राफ चाहिए, आपका कोई आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, और आपका सिग्नेचर चाहिए. दैट्स इट. यहाँ पर अभी कोई सा सर्टिफिकेट वगैरह आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है. आपके कोई एक्स्ट्रा करिकुलर्स के लिए वो अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का नहीं मांग रहे हैं आपसे. तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अपलोड इज योर फोटोग्राफ. Ensure that the photograph is a recent one. The passport size photograph is a recent one. If you wear specs, you do not have reflection of light on the specs. अभी शायद आपको मेरे ग्लासेस पे रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा लाइट का. ये वहां पर जब आप यहाँ पे फॉर्म में फिल करोगे तो आपकी फोटोग्राफ के ऊपर वो रिफ्लेक्शन भी नहीं होना चाहिए, है ना. इट शुड बी अ क्लियर फोटोग्राफ वेरी आर विजिबल. डोंट वेयर अ हैट और अ कैप और यू नो लॉट ऑफ एसेसरीज व्हाइल क्लिकिंग योर फोटोग्राफ. सिंपल सा बेसिक सा फोटोग्राफ जो है वो हम यहाँ पर पुट अप करेंगे, और ये इंश्योर करेंगे कि साइज क्या होना चाहिए फाइल का? एनीवेयर बिटवीन 20 to 50 KB. वहां पर हमारा MB तक लिखा हुआ है तो उतना कर सकते हो आप, बट यूजुअली 20 से 50 KB का हो तो प्लीज यहाँ पर अपलोड कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट जो है आपका सिग्नेचर. अब सिग्नेचर कैसे अपलोड करेंगे? यू नीड टू टेक अ व्हाइट पेपर, डू योर सिग्नेचर्स ओवर देयर, टेक अ पिक्चर ऑफ इट एंड देन अपलोड इट ओवर हियर.
ठीक है, अगेन इट शुड बी अ क्लियर पिक्चर. Your signature should be the signature that you use, a valid signature that you have been using. Because again, आगे जाके भी बहुत सारी जगह पे साइन करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि there is a variation in the signature. फाइन. सिग्नेचर का इमेज का भी फाइल साइज कितना होना चाहिए, वही 20 से 50 केबी के बीच का, और आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे. अब जब आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पर आओगे तो यहाँ पर आप पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका वोटर आईडी, आपका लाइसेंस जो है, ये 5 चीजें आपको ड्रॉप डाउन में दिखेंगी. तो यू कैन सेलेक्ट एनी वन एंड अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू राइट डाउन. सो हियर आई सेलेक्टेड आधार, और आधार कार्ड का नंबर जो है आई विल हैव टू इनपुट ओवर हियर. और उसका जो है अगेन, उसका जो पीडीएफ है वो मुझे स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा. तो इट इज गोइंग टू बी रियली गुड कि अगर अभी तक आपने आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्कैन करके नहीं रखे हुए हैं, क्लाउड पे कहीं नहीं रखे हुए हैं, आपकी मार्कशीट्स हैं, आपके आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स हैं, आपकी फोटोग्राफ्स हैं, आपके सिग्नेचर्स हैं, तो प्लीज उनको करके रख लेना, क्योंकि और भी बहुत सारे फॉर्म्स अब आप भरते ही रहोगे. क्योंकि यहाँ पर जैट का फॉर्म जब हम फिल कर रहे हैं तो वी आर मेकिंग आवर सेल्फ एलिजिबल फॉर एक्सएलआरआई. जैसे वहां पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि डू यू वांट टू गेट इनटू एक्सएलआरआई और नॉट, तो यहाँ पर हम एक्सएलआरआई के कोर्सेज के लिए जो है वो एलिजिबल रहेंगे. बट अगर हमको अदर इंस्टीट्यूट जो कि जैट का स्कोर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था 160 प्लस भी स्कूल्स हैं, उनका अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा. तो फिलिंग द जैट फॉर्म विल नॉट मीन दैट यू हैव फिल्ड द फॉर्म फॉर ऑल दोज इंस्टीट्यूट्स एज वेल. तो उनका आपको अलग भरते रहना पड़ेगा. जैट का स्कोर आपको वहां पर जो है अटैच करना रहेगा. ठीक है. तो फोर्थ स्टेप क्या है हमारा, टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स. और डॉक्यूमेंट्स क्या है, फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, और हमारा एक आइडेंटिटी प्रूफ है. ये जब हम लोग कर लेंगे तो वील क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड वील कम डाउन टू दी डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन इज सिंपल. आप अपना नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, एंड अगेन यू विल सी कि यहाँ पर बैक का भी ऑप्शन है, सेव एंड एग्जिट भी है. तो बैक का मतलब है आप एक बार बैक जाकर जितनी हम डिटेल्स भर चुके हैं, पर्सनल डिटेल्स, हमारी अकेडमिक डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड डिटेल्स, हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने अपलोड करे हैं, अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है तो हम बैक जाकर वो चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है. और सेव एंड एग्जिट का मतलब है कि अभी आप यहाँ पर स्टॉप करके एग्जिट हो रहे हो और फिर कभी आकर आप जो है अपना फॉर्म फिल कर दोगे. ठीक. और यहाँ पर देखोगे प्रीव्यू और कंटिन्यू. प्रीव्यू क्यों दिया हुआ है, बिकॉज हमारा सारा जो फॉर्म है जो हमको फिल करना था, जो हमको स्टेप्स जो हमारे लिए एसेंशियल थे in order to reach the payment stage that have been done by us. So you can preview, you can check whether the spelling mistake, whether you have written the, enter the correct spellings, correct name of your city, correct name of your institute, whatever we have input, एक बार आप उसके ऊपर नजर फेर सकते हो और फेर लेना कि कहीं पे गलती से मिस्टेक ना हो गई हो, क्योंकि वो मिस्टेक हमको हमारा कैंडिडेचर कॉस्ट कर सकती है. ठीक है. तो फिर प्रीव्यू में एक बार देखकर फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे. जब हम कंटिन्यू करते हैं तो हम हमारे पेमेंट डिटेल्स पर आ जाएंगे. अब पेमेंट डिटेल्स में मैंने आपको बोला था दैट देयर इज अ फी फॉर दैट एप्लीकेशन फॉर्म एंड देयर इज अ फी अटैच्ड टू ऑल द 6 कोर्सेज दैट वर लिस्टेड डाउन ओवर देयर. तो आपके जैट एप्लीकेशन फॉर्म की फी कितनी है, 2100 रुपीज. और हर कोर्स की फीस में 200 ऐड होता जाएगा. सो अगर आप टोटल देखोगे तो 6 कोर्सेज थे, हर कोर्स की 200 रुपए फीस थी. तो 6 into 200 दैट इज 1200, और 2100 तो हमारा फॉर्म का ही एप्लीकेशन कॉस्ट है. तो 2100 के अंदर मैं 1200 ऐड करूंगी तो 3300 मेरा मैक्सिमम अमाउंट जाएगा. ठीक है. 3300 मेरा मैक्सिमम अमाउंट जाएगा. तो अब आप देख लो कि 2100 के साथ अगर आपने सिर्फ बीएम चूज करा है तो आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, 2300. वहीं अगर आपने एक और दैट इज एचआरएन भी सेलेक्ट करा होगा तो वो कितना हो जाएगा, 2600. तो ये कैलकुलेटेड फी जो है वो आपके यहाँ पर आ जाएगी. तो यहाँ पे 2100, और क्योंकि मैंने चूज कर रखा था बीएम एचआरएम, तो वहां पर मैंने मेरा अमाउंट कितना आया, 2300 रुपीज. और अगर मैंने बीएम और एचआरएम दोनों चूज करे होते तो वो 2600 हो जाता. ठीक है. तो इसके बाद आप पेमेंट कर देंगे, और पेमेंट करने के बाद फाइनली जो है वो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा. रिमेंबर द लास्ट डेट टू रजिस्टर फॉर ज़ैट 2024 इज 30th November 2023. तो 30 नवंबर 2023 तक आपको ये फॉर्म फिल कर देना है. इंश्योर कर लीजिए कि इससे पहले आप फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि बीच में कैड भी रहेगा, ऐसा ना हो कि आप ज़ैट का फॉर्म फिल करना भूल जाएं. तो अभी ही फिल कर दें. And if ever you have some queries, you can get in touch with us. The details are mentioned over here at the bottom of the slide. And I'll keep seeing you in other videos. Till then, bye-bye.